to a career and you got to pick a career for yourself, you must be sure of what you want to do. Until you're not focused, until you're not sure of what exactly you want to do, you will never be successful. So hence, when I came here, it's not that I wasn't an actor, but it was that I had to take a decision. What do I want to do in Bombay? Would I pursue my acting career or my career as a director? So I chose that I want to pursue my career as a director, even before I came to Bombay. When you're making a film for the theatres, you're not making it for a tele audience. You may release it on television later, but the format, the mounting, the approach is for a theatre-going audience. And the idea is that you must have a repeat audience, that your message has to be dug, and you can't just have a single release. So I have never aimed at having my films made so that they get released on television the way NFDC thinks, and they recover their cost with one telecast. No. My idea when I make films is that it must reach out to the remotest corner of India. And then if it does well abroad, that's my bonus. So for me, it's not a 9-to-5 job. It's a 24-hour job. If I'm awake, I could be working. I mean, I could be thinking about anything at that time and not being where I was. So, I mean, that's what really happens with you. So that's what really is not right, actually, but you should know how to divide your time. But then you learn all the way. Full Volume brought to you by Closer जेल और माउथवॉश से फ्रेश ब्रेथ का जबरदस्त एहसास गारंटी हमारी in association with Fruity. Just like that, Imami Odyssey and Golden Beauty. एक के साथ दूजा मुफ्त. And अकेला हो दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता मैं दोस्ती के लिए। एक दोस्त ढूंढता
थी ना। Excuse me, uncle. आपकी चिट्ठी. Why not try email at yahoo.co.in? Do you, Yahoo? Darling, your brother says he's coming. Oh no. Okay, everybody, come on, pack up and run. Hey दोस्त, लाइफ के 3 कूल नए नाम. दोस्ती, धमाल, and of course, दिल लगी. 10 super hot pop tracks का फंडा. चमक चम चम चमके है सितारों में तू लफ्जों की Channel Hits 5, available on Universal. फ्लेयर स्पोर्टी पेंस में है एंटी ग्रुपिंग टेक्नोलॉजी जो धब्बे नहीं छोड़ती और देती है 100% क्लियर एंड स्मूथ राइटिंग. फ्लेयर स्पोर्टी 100% राइटिंग सेटिस्फैक्शन गारंटी. Welcome back, ladies and gentlemen, to Star Stop. My name is Sri, and yes, the gorgeous Rishita. So, when is it now due for release? The film? Shararat is about July. Okay. 12th of July. What is it that's going to happen in your head when the film comes? I do not know. I take a day at a time. So I don't know what's going to happen then. When it happens, I shall tell you all. So where do you see yourself now? I mean, you've done 2 films and you played 2 different characters completely. And Ashoka the Great was this character who is what? She's a Buddhist girl. Oh wow. And she's a very subtle, calm, very plain, de-glamorized, simple girl. Alright. She's somebody who follows the middle path, the Always. Buddhist way of life. Yeah. There's no real black and white that's happening. No. So you don't need agree. Yeah. So that's the way she is, and you know she's completely opposite to what I've played in Shararat. Which is this impulsive. Yeah, she's crazy, on crazy, the and she edge. talks, and she's all over, and she's. So, do you feel that, I mean, when you go into as far as characterization is concerned, would you say that you take up a character, and if you don't like a certain way the character is developing, would you have a say in that? I mean, do you voice your opinion? Yeah, I would voice my opinion, and because the 2 people that I've worked with have been really great to work with, and there have not been any kind of hassles, and anytime I had a doubt I would ask them, and either ways we would talk it out and solve it. And of course, that's the way it works. Otherwise, exactly, that's teamwork, you know. Yeah. So very important Very, when very, you're very doing a important, yeah. film and you're performing. So. Thanks for the ground education. I need it. Okay. So now, which is the one song which you want to hear? Your favorite? I'd like to listen to one of my songs from Shararat. Alright, well, ladies and gentlemen, go ahead and listen to one of Rishita's songs from Shararat. कहता है जो चाहे हम वो करें, हम न कोई बात सुने, जो चाहे राह चुने दुनिया से, हम क्यों डरे। कहता है जो चाहे हम वो करें। Welcome back, ladies and gentlemen, to Star Stop. My name is Sudhi, and as we all know, the gorgeous, the ever so beautiful, yes, the ever so lovely Rishita. Enough about me now. So finally, now you've done song, and you're a philosophy student, so you've always sort of grown up with a certain amount of, a lot of reading, and listening to a lot of music, and a certain amount of serious reading. So did you see yourself doing cinema at all? No, I tell you, ever since I've been in school, I've been into performing. I've done Kathak for 10 years, and my drama, and I trained, in my Hindustani classical music for 3 years. So
and I was very active in sports. I used to play basketball and all the games in school. I was captain in school. So, okay. So, it has been performing and creativity and anything inclined towards fine arts has been always a part of me. Right. So, it was not new, or I was not like, into mind with whether I should or I shouldn't, because I always knew somewhere at the back of my mind that whatever I do has to be a hobby, because only then does one enjoy it. Yeah. So, and only then can you excel and you can do better. So as far as Ashoka the Great was concerned, how is it working with Mr. Shah Rukh Khan and amazing, and Mr. Abhishek Bachchan and so on and so forth? Mind blowing. Really? Yes, yeah, that good. Very much. Why? Shah Rukh, he's hey. अच्छा, अब बताओ कि कोई बात नहीं है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे दिल में क्या है तेरे चेहरे पे साफ लिखा है, और हर माँ अपने बच्चों का चेहरा पढ़कर बता सकती है कि वो खुश है या नहीं। मामा, शायद आपके नसीब में बहू का सुख लिखा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मामा, मैं फिर हार गया। बेटा, मैंने आज तक तुझे कभी ये शिकायत की कि तूने मुझे बहू ला के नहीं दी। बेटा, तू मेरे साथ है और वो ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। मैं जानता हूँ मामा, ये बात कभी आपने अपनी जुबान से नहीं कही मामा, लेकिन हर माँ चाहती है कि उसके घर में एक बहू आए। बेसब्री से उसे इस दिन का इंतजार होता है कि अपने बेटे को वो दुल्हे के रूप में देखे। अनुपम, बेटा, मैं तेरे लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो मोना को लेके परेशान हूँ। तू तो जानता है कि वो कितनी सेंसिटिव है। वो हर छोटी बात को दिल से लगा लेती है। वो मिहिर को भूलना ही नहीं चाहती। आप मोना की फिक्र न करें। मोना आपकी बेटी होने के साथ साथ मेरी बहन भी है, आप उसकी चिंता ना करें। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो इतनी कमजोर नहीं है मामा, और हम लोग उसे कमजोर नहीं होने देंगे, उसे कमजोर नहीं होने देंगे। मिहिर, मेरे बेटे, कैसा था तू? हाँ, कैसे रहा अपनी माँ और अपने बच्चे के बगैर? देखिए, मुझे अगर पता होता कि मैं कौन हूं तो मैं दौड़कर आपके पास चला आता, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरा नाम क्या है, मुझे क्या हुआ था। अब मेरी बदनसीबी देखिए, जब आप लोग मेरे सामने हैं और मैं जितना आपको पहचानने की कोशिश करता हूं, मैं उतना ही उलझ जाता हूं। लेकिन आप लोग जिस तरह मेरे साथ प्यार से बात कर रहे हैं, मैं इतना तो समझ सकता हूं कि आप सबके साथ मेरे बहुत ही गहरे संबंध हैं। बेटा, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वापस आने से हम सबको दोबारा नई जिंदगी मिली है। तुम्हारे यहां न रहने से हम सबकी, यहां की हर चीज की जिंदगी अधूरी थी, उसमें कोई जीवन नहीं था बेटा। हम सब लोगों को तो यह भी नहीं मालूम था कि हम तुम्हारे बगैर जी कैसे पाएंगे। देखिए, ऐसा नसीब हर बेटे का नहीं होता जिसे इतना प्यार करने वाला परिवार मिले। बात भी
के कोमल पेट के लिए वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर बहुत ही सुरक्षित है, भरोसेमंद है, रोज दीजिए। क्या हुआ? बच्चा रो रहा था। वुडवर्ड्स दे दो, वही तो दिया था जब मैं छोटी थी। क्या हुआ? पेश है नया ऑल आउट डबल पावर, जिसमें है एक्स्ट्रा MMR यानी मच्छर मारने की डबल शक्ति। ऑल आउट डबल पावर डबल शक्ति, जो चले 60 रातों तक। थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और चलेगा। बेहतर नहीं, बेहतरीन। पेश है नया ओरल बी एक्सीड टूथब्रश। इसके क्रिस क्रॉस रेशे दांतों के बीच घुसकर हानिकारक प्लाक को निकाल बाहर करें। साफ स्वस्थ दांतों के लिए नया एक्सीड ओरल बी की ओर से। पेश है जो रोज, गुलाबों की खुशबू आप में जगाए एक नया जादू। हंसती नहीं नजर तेरे रूप से, हंसती नहीं नजर, ये है जो रोज का जादू। जो रोज, खुशबू का जादू। 3 जो रोज खरीदिए, 1 फ्री पाइए, जल्दी कीजिए। My Santa! Santa! बजाओ मस्ती की घंटी। हाय, मैं हूँ दीप्ति भटनागर। दुनिया देखनी है तो आपको चाहिए एक हमसफर। देखिए दुनिया को मेरी नजर से। मुसाफिर हूँ यारों, हर रविवार दोपहर 12:30 बजे केवल स्टार प्लस पर। दुश्मनों के हाथ शहीद होने से धमकी भी नहीं जाती, उन्हें गोली मारकर जीती जाती है। स्टार इवेंट में गोविंदा नंबर 1 इस शनिवार रात 8 बजे केवल स्टार प्लस पर। मैं शायना, कुणाल की पत्नी। सुनैना कुणाल की पहली पत्नी। कहते हैं वो खुद ही घर छोड़कर गई थी, फिर क्यों वापस आना चाहती है वो? कुणाल तो बेहद प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन कहीं किसी रोज आज रात 8:30 बजे केवल स्टार प्लस पर। के प्रायोजक है नया डेटॉल टैल्कम पाउडर, खारिश से संबंधित कीटाणुओं से लड़ता रहे, और द न्यू इलेक्ट्रा फ्रॉम कैल्विनेटर, द कूलेस्ट वन। मंदिर भी छोड़ा, कितनी दूर लगाए तूने जाके लाश पे तेरे शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। तेरे द्वार पे जोत जगाते, तेरे द्वार पे जोत जगाते, युग बीते तेरे
गुण गाते, ना मांगू मैं हीरे मोती, मांगू बस थोड़ी सी ज्योति, खाली हाथ न जाऊंगा मैं। खाली हाथ न जाऊंगा मैं, दाता द्वार से तेरे शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। हमारा एक बेटा था। मैं अभी बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। एक दिन सुदर्शन मेहता का किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला चीर कर उसकी हत्या की गई। धार लगवा ले, कत्ल कर दिया है। तो देखा चिश्ती सर, उसका कत्ल हो गया। किसी पे शक है आपको? वो बुढ़ा ये काम नहीं कर पाएगा। के साथ हम वेट कर रहे हैं कि कातिल आएगा हमारे पास और हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। तुम्हारे जान को खतरा है। ये है हमारे बुढ़ापे की मजबूत लाठी। अपने बेटे को संभालूंगी। जब महसूस होगा कि अब नामुमकिन है तो उसे जहर दे दूंगी। कगा शुक्रवार रात 8 बजे भारत में और शाम 6:30 बजे UAE में, सिर्फ सहारा टीवी पर। The stage is set, first time ever on Indian television, an entertainment act, the likes of which never seen before. आपकी धड़कनें रुक जाएंगी जब हिंदुस्तान के सबसे रोशन सितारे नाचेंगे, गाएंगे। Yes, it's the Sansui Viewers' Choice Movie Award. Please up to the viewers, let's see what they decide. Surprise, surprise! हम वादा करते हैं कि ये वो शाम होगी जो आपकी यादों में हमेशा के लिए वाबस्ता हो जाएगी। सैंसुई व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड रविवार 3 जून रात 8 बजे भारत में और शाम 6:30 बजे UAE में, सिर्फ सहारा टीवी पर। Ada is all about style, fashion, beauty and fitness. Ada में देखिए डिजाइनर शोज से लेकर what's in, what's out in the world of fashion. मेकअप से स्किन केयर तक देखिए खूबसूरती के राज ब्यूटी में। अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रखिए इन एक्सरसाइजेस से। Could you ask for more? तो देखते रहिए अदा हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ सहारा टीवी पर। अदा रविवार दोपहर 12 बजे भारत में और सुबह 10:30 बजे UAE में, सिर्फ सहारा टीवी पर। सहारा की अगली पेशकश मारिया।
के क्या सोचे रे वो नीलों के तारे तू सो जा रे। हल्के हल्के आई चल के बोली मेरे चुपके क्या सोचे रे ओ नीलों के तारे तू सो जा रे। ठीक हो जाएगा। एक तेरा भाई आया है। देखो इधर जनाब मन कहाँ खो गए, देखो इधर जनाब मन कहाँ खो गए। जान लो के आज से मेरे हो गए तुम, जान लो
भी लो, ये मान भी लो, ये जान भी लो, ये मान भी लो। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। गरे मग पम द पनि द सनि सा रे सनि द पम प द नि सनि सनि द पम प ग म द प ग म रे त मधुबन में राधिका नाचे रे, स स सनि द पम प द प ग म रे सनि रे स स ग म स नि द स। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओदे नादर दिरतानी ताजा रे धीम धीम तना ना नादर दिरतानी ताजा रे धीम धीम तना ना नादर दिरतानी ताजा रे धीम धीम तना नादर दिरतानी ताजा रे। ओदे ताना धीर धीर ताना धीर तुम धीर 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 नादर गिरता के तुम चिर गिरता के तिरकड़ ताजा ने नादर दिरतानी ता। ओदे नादर दिरतानी ता, ओदे नादर दिरतानी ताजा रे धीम धीम तना ना।
दूल्हा बनूंगा मैं, बाजा बजेगा, दुल्हन बनेगी weekly roller coaster ride to all the nightclubs in India. Compact Disc, the ultimate party handbook, and absolutely your last chance to hobnob with the lifestyles of the fun and frenzies. Which are the top 5 tracks that you play here? What's the kind of clothes that you think people should wear to a nightclub? Something very funky, colorful. Compact Disc really gets you close to where the action is. Food, music, discos, attitude. We've got it all. Compact Disc every Friday 10:30 p.m. and every Sunday 8:30 p.m. only on C Music. What they like. What they hate. दिन से मंगलवार रात 8:30 बजे और गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सी म्यूजिक पर। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ यार जुदा, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है।
दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। वाह वाह, इसे कहते हैं गाना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही काम बनता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम। मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे तुम्हारा है दोस्तों, दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। पड़ा है कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। दिल हरा है दोस्तों, दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मेरे वास्ते
है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा दोस्तों। Is a power to entertain. Blue informs the charts, releases, reviews, web, games, fashion, trends, trendsetters, events, shows. Blue on Z Music, an entertainment guide, power to entertain. Blue, Monday 8 p.m. and Thursday 5 p.m. Only on Z Music. Originals with multinational charm. Also duplicate English song. Dabka, Z Music पे अटका, Foreign माल, कमाल ही कमाल। फॉरेन माल हर रात 11 बजे और शनिवार और रविवार को 11:30 बजे सिर्फ Z Music पर। Man, these clothes, they're not happening. Machan, stop complaining all the time, man. We are the Machans. Let's go. आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, तो आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा। बादलों के पर्वतों पर कोई बारिश का मका होगा। मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ कभी उड़ता हुआ, कभी मुड़ता हुआ मेरा रास्ता चला। हो मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ ये जमीन चल रही है, कहीं धूप ठंडी ठंडी, कहीं छाँव जल रही है। इस जमीन का और कोई आसमां होगा, आसमां होगा। मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ,
कोई आसमां होगा, बादलों के पर्वतों पर कोई बारिश का मकान होगा। मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ कभी उड़ता हुआ कभी मुड़ता हुआ मेरा रास्ता चला। मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मैं हवा के परों पे कहाँ जा रहा हूँ, Shankar, come on down. I had this strange dream, man. Yeah, let's go. Wake up to the tunes of today. Let the music rule. For the most amazing tracks of our time. Tune into Sizzlers. Sizzlers, daily 9:30 p.m. and 5 a.m. only on Zee Music. Askar, The Colors of Courage. Hey girl, hey boy. Hey girl, hey boy. Here we go. धमाकेदार क्लास है एकदम। अभी आप इतना फास्ट बोलेंगे तो फिर ऑर्डर कैसे देंगे, और अगर समझ में जाएंगे तो बोलेंगे कैसे, बोलेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। To start off with illegal parking. Okay, let's find them 100 rupees. I think you should go to a doctor, you know. Full Age every Monday 8:30 p.m. and Wednesday 5:30 p.m. only on Zee Music.
दाना नी तो दाने तेरे दिल दी रब जाने, दाना नी तो दाने तेरे दिल दी रब जाने, मेरे दिल दा खुदा गवाह हाल ये नी प्यार पना दाना ओए ओए दाना ओए ओए दाना ओए ओए दाना। जाने तू ते जाने बेकरार नू, जाने तू ते जाने बेकरार नू, मेहंदी तेरा सर पे तेरे प्यार नू, मेहंदी तेरा सर पे तेरे प्यार नू, प्यार खुदाई नूर इलाही, प्यार खुदाई नूर इलाही, प्यार खुदाई नूर इलाही। दाना 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 नी तो दाने तेरे दिल दी रब जाने, दाना नी तो दाने तेरे दिल दी रब जाने, मेरे दिल दा खुदा गवाह हाल ये भी प्यार पना दाना ओए 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 दाना ओए मस्तियाँ बरसती है कोई जागी रातों में, दुनिया रंग बदलती है सच्ची झूठी बातों में, मौसम ने किस्मत लिए वाले चल दिए बातों में, किस्मत लिए नहीं जाना है कहाँ। छप्पड़ फाड़ मौला अपनी जेबे जान मौला अब तुम
दे दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे, हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। You know what? We've reached this week's halting point. So till my engines feel more revved up and ready to rock, right now. But before leaving, let me I've expressed the only official worldwide countdown show. So don't forget to keep watching. This is me, Maria, saying I'll be back. आसन की सिद्धि पाई है। आप कब कैलाश चढ़ेंगे? चढ़ेंगे नहीं, उतरेंगे। क्यों स्वामी जी, ये पिछले 20 वर्षों से हेड कांस्टेबल ही है, इनका प्रमोशन नहीं होगा क्या? ये विधि का विधान है, छोटे भाई को पीड़ित करने वाले को प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये डगल वेद में लिखा है। आपको मैंने कैसे पीड़ित किया? तुझसे एक स्पोर्ट्स शो की मांग की थी, पूरी की तूने? क्यों तो लाया हूँ। ये पढ़ाई में क्यों नहीं दिखाते? पढ़ाई में मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्या? सिर्फ कल रात को एक फिल्म देखने गया था बस। पकड़, ड्यूटी से आते ही मुझ पर गर्म हो जाओगा जानता था, इसलिए स्वामी जी बनके मैंने तुम्हें ठंडा कर दिया। मैंने तुझे फिल्म देखने के लिए कहीं मना किया है? बस इतना कहा है कि नींद खराब करके नाइट शो मत देखा कर। इवनिंग शो देखने क्यों नहीं गया? इवनिंग शो की टिकट कहाँ मिली? वो जुरासिक पार्क है, धाकड़ फिल्म। फर्स्ट डे कोई देखूंगा, कसम खाई थी, तभी तो तोड़फोड़ करके देख के आया। एक मामूली फिल्म के लिए इतना आवेश क्यों? क्यों इतना आवेश? प्रभु, कितनी बार कहा है तुझसे, आवेश हो या दुख हो, गुस्सा हो या खुशी, अपनी भावनाओं को 5 मिनट तक रोके रखो। उन 5 मिनटों में मन शांत हो जाएगा और शांत मन से लेने वाला हर एक फैसला अच्छा ही होगा। तुम 5 मिनट की बात करते हो भैया, अब 1 मिनट भी देर हुई तो मुझे लेडीज बस में घुस के जाना पड़ेगा। ये बात है और जानन के तुझे मैं भूले ना पाऊंगा। गुमसुम सी नजर, मासूम अदा, उन लम्हों का एहसास, कहीं कुछ ठहर गया है, कहीं कुछ कहना रह गया है। तररम, एक हसीन सफर। Tararam, Monday to Thursday, 2 p.m. only on Z Music. But in
most, it seems like he's repeating himself. Ditto for Saif Ali Khan, who's played a Casanova one more time. But it is Isha Deol who brings a pleasant surprise with a performance that's very natural and very genuine. Though her looks are inconsistent at places, yet the effort that has gone into her role shows on screen. To sum up, on the whole, Na Tum Jano Na Hum is a weak film in all respects and will find a very few takeaways. In Mumbai, the film has opened to a 98% response, which is very good. But in other parts of the country, the opening is not up to the mark. Several places with 60, 70, 80%, which does not befit a big film. Also, in Mumbai city, the current booking window is open on the Saturday, on the second day itself, which is again not a positive sign. In days to come, the collections are bound to slide downward. मैं प्यार में हूँ, मुझे प्यार हो गया. And now let's have a look at the next release, Ab Ke Baras. Ab Ke Baras is all about reincarnation. It tells the story of Arya Badar and Amrita Rao, who are reborn and who want to settle scores with Ashutosh Rana, who had murdered them in their previous life. मेरा दिल खो गया, तेरी आँखों की नींद बनके, वो तेरी आँखों की नींद बनके, तेरी आँखों में सो गया. A storyline like this is very different and is of course very interesting for the Indian audiences. In the past, several films have been made on this theme, in this genre. Notable among them being Kar, starring Rishi Kapoor, Karan Arjun starring Salman Khan and Shah Rukh Khan, and of course Kudrat starring Rajesh Khanna, Vinod Khanna and Hema Malini, and of Rajkumar. Ab Ke Baras is similar to all these films, and that's what takes the essence away from this film. Mainly because what we've seen in these films is also part of this film. To offer and will therefore face an uphill task at the box office. The film has opened to a poor response almost everywhere in the country. The opening in Mumbai is around 50% plus, and so is the opening similar in other parts of the country, which is not encouraging. One of the reasons why the film has not opened to a good response is because the promos and the overall publicity was not exciting at all. It did not look like a launch of a star film, which is the reason why the crowd stayed away. In days to come, the collections are bound to slide further. And now let's have a look at the forthcoming release, Danger. Danger is a medium-budget film starring Ashutosh Rana, Tara Deshpande and Jas Arora. It's a medium-budget film, but the kind of promotion that's going on television for the past few weeks has generated tremendous curiosity for this film. Danger is directed by Govind Menon, who has assisted several big names from South. It's been produced by Vasant Chheda, whose first film this is. It's an important release for Ashutosh Rana, Tara Deshpande and Jas Arora, mainly because Ashutosh Rana is riding a successful wave after Raz. Also, Tara Deshpande, who has been seen in very few films, also needs a foothold in the Hindi film industry. Ditto for Jas Arora, who is a well-known model, and his first film in Hindi, Dushman, did not set the box office on fire. Will Danger follow the footsteps of Style, Ye Dil Ashikana and Raz? Only time will tell. Let's keep the fingers crossed on that. I'll fight for the moon, Mars, Jupiter, and the outer galaxies of Alpha Centauri.
For people who read fashion as a convoluted concept, here is a simplified explanation. As fauna and animals need a change of season, human beings have opted for a change of the overskin. Interesting observation, courtesy our very own Nasruddin Shah. So a link ahead in the series of tribute we've been giving to this ever-changing trait of fashion called style. I'm Zenobia Boucha. Bringing in the newcomers who are the offshoots of the star family tree has been the order of the day. And mind you, this league is going fat with the passing time. Once again, we talk to a newcomer who's on the doorstep of Tinseltown. Unexpectedly is speculative, hyper, anxious, and yes, what she talks about is not predicted. Akanksha and her fashion tale in today's style. Fashion? It's a trend which a person says, which I'm going to be setting very soon. I'm not a brand person. Wherever I like something, wherever I find something good and trendy, I just pick it up. Anywhere. Most likely abroad. I love shopping abroad. Where New York, London, Paris, pick up joints. I love London, basically. I basically always wanted to make my own identity and make an own trend for myself. So I really never bothered about what the fashion is because I always wanted to have my own identity. Not really. I mean, I just felt, as I told you, I always felt that fashion for me is something that what suits me and what I feel like, what suits me. So whatever I like to wear, I always just do that. One thing that comes over and over in her talk is her desire to top the world. You know, even if you talk to her about clothes, fashion, style, you have this upright person with a bundle of dreams to be realized. Well, this class has a lot to say, so what do you say? Wanna rock and roll now? I used to basically just do whatever I want. I basically love Julia Roberts, that's it. I never ever really focused so much on the wardrobe. I told you, I just do exactly what I like to do and I wear what exactly I like to wear and I just wear whatever suits me. I mean, you create your own identity. I mean, clothes definitely play a very important and vital role in everybody's life because it portrays your character and it portrays what you are. So it definitely does play a very important role in everybody's life. And I really don't care where I pick up my clothes from or what I do because I just feel that whatever I wear, whatever I pick up, whatever I do has to just suit me and suit my personality, and that's exactly what I do. I love cycling shorts with long t-shirts and shorts and jeans with a white shirt. I gather while a teenager, Akanksha was a pretty plump chick, and the choice of those long tees and cycling shorts must have been a pretty sight. Well, there's a lot of spiced up things to be unfolded here, so let's keep on rocking and rolling. The best dressed I feel is Rekha. I mean, she is totally enigmatic and she's absolutely fusion. She's just got everything around. As I told you, I just want to make my own identity, and fashion is basically whatever suits you, whatever you look good in, whatever you feel comfortable in and good in. That is fashion for every individual. My favorite color is white. I love ethnic. In fact, ethnic is it's my attire. I love ethnic. I do like westerns, but I prefer ethnic because that suits me more and I feel that's more me. I feel being tall and like beautiful. Indian suits me more. I love Manish Malhotra. I mean, I think he is awesome. He's really good. JJ Valaya, Rohit Bal. I just love him. He has an amazing sense of clothes. I mean, he dresses up people really well, and he has an amazing sense of mix and match, which is really, he creates fusion, so that's really good. I mean, that's something which is really nice. I mix and match all the time. I love clothes. Clothes is my passion. I just freak on clothes, and I'm doing it all the time. I mean, I pick up nearly a new outfit every day. Serious. I love white. So I basically live in white when I'm like at home, and anywhere I go out, I basically live in white.